बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे आज जो संडे टेस्ट इवनिंग हुआ है जिसमें बायोलॉजी के आप लोगों की लास्ट पोर्शन इंक्लूड था, उसके एमसीक्यूज। इसमें हमारे पास इस लाइफ है, डाइजेशन, सर्कुलेशन और इम्यूनिटी, ये 4 चैप्टर थे। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज आते हैं, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन HIV एंड एड्स। एड्स और HIV में क्या रिलेशनशिप है? तो ऑप्शन सी को जरा गौर से देखें। एड्स इज अ सिंड्रोम रिप्रेजेंटिंग द फाइनल स्टेज ऑफ अ प्रोग्रेसिव HIV इन्फेक्शन। जब HIV इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे जो कंडीशन काज होती है उसको एड्स कहा जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकेंड सीक्वेंस पे आते हैं। अ पेशेंट हैज अ हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड but their killer T cells are not being activated. Which cell type is HIV likely attacking to cause this specific failure? तो जाहिर बात है ये हमारे पास B सेल्स जो होते हैं, हेल्पर T सेल जो होते हैं, इनकी फेल्योर की वजह से हुआ, जिसको CD4 सेल्स B कहते हैं। वजह क्या है? वजह इसका ये है कि हेल्पर T सेल जो है उसका काम क्या है कि वो किलर T सेल्स को एक्टिवेट कर ले। चूंकि उन्होंने उसको एक्टिवेट नहीं किया, इस वजह से ये मसला आ गया। वजह क्या थी? याद रखिए, इफ हेल्पर T सेल्स आर डिस्ट्रॉयड तो इसके बाद जो है एक जो एक्टिवेशन फेज होगा वो नहीं होगा। सो नो एक्टिवेशन ऑफ किलर T सेल्स, ये मसला होगा। सो इस वजह से ये मसला आ जाता है। Next MCQ दिया हुआ है 3. Why is HIV able to remain undetected in the body for month or even year? चूंकि वो होस्ट सेल्स के अंदर रहता है, इस वजह से। ऑप्शन बी, इट लिव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड CD4 T cell without immediately causing visible symptoms. ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ MCQ पे आते हैं। Opportunistic disease in AIDS patients are characterized by, किस वजह से होती हैं? Infection that healthy bodies defend would normally be able to fight off. So option B is correct. MCQ 5th आते हैं। Which protein is responsible for cutting long polymer protein chain during the viral life cycle? HIV में 3 किस्म के एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। तो ये प्रोटीएज का काम है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 6 पे आते हैं। Which cell specifically possess the CD4 receptor that DNA targets? So ये हेल्पर T सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7th नंबर पे आते हैं। What is the primary role of killer T cells? Killer T cells का प्राइमरी रोल्स क्या है? So they directly attacking and destroying infected or malignant cells. ये जो है ऑप्शन सी is considered to be the correct option. MCQ नंबर 8 पे आते हैं। What happened to HIV RNA during second step of life cycle? What happens to HIV RNA during the second step of life cycle? फर्स्ट स्टेज होता है वो है हमारे पास बाइंडिंग इन्फ्यूजन। सेकेंड स्टेप जो होता है ये उसकी जो RNA है उसको कन्वर्ट किया जाता है cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA में। उसमें होता ये है कि HIV, लेट सपोज ये उसकी RNA स्ट्रेन है। सो एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गावानिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गावानिन। इससे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बनाया जाता है, थायमीन, साइटोसिन, गावानिन, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गावानिन, थायमीन, साइटोसिन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बन जाता है। सो अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद याद रखें ये आपके पास DNA बन जाती है। इसको cDNA कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। सो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है और इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन सी इज कन्वर्टेड टू HIV DNA by reverse transcription. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9. अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज आर दोज दैट, ये कौन सी डिजीज होती है जो होस्ट का इम्यून सिस्टम को देख ले कि वो कमजोर पड़ चुका है तो उस पर अटैक कर सकते हैं। सो टेक एडवांटेज ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम टू मल्टीप्लाई।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल, इसके दरमियान क्या डिफरेंस है? बी सेल्स रिलीज एंटीबॉडी, टी सेल्स अटैक डायरेक्टली टू कोऑर्डिनेट डिफेंस, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो एमसीक्यू नंबर 10 जो है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। 11th पे आते हैं। व्हाई इज द इम्यून सिस्टम डिस्क्राइब्ड एज फेलिंग इन द एड्स, किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द लॉस और इनएक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स की वजह से, वो एक्टिवेट नहीं हुई है तो टी सेल एक्टिवेट नहीं की इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 11 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए अकर्स व्हेन, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए अकर व्हेन विद इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस, ये जो डीएनए बन चुकी है ये एचआईवी का जो एचआईवी की जो डीएनए बन गई है सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, ये होस्ट सेल्स की डीएनए के साथ इंटीग्रेज एंजाइम्स की मदद से इसको अटैच किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट describe the obligate nature of bacteriophage, it must use the host by synthetic machinery to replicate, वैसे obligate क्योंकि ये लिविंग है, होस्ट सेल के बाहर जिंदा नहीं रह सकता, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 in a bacteriophage the genetic material DNA or RNA is physically protected by which specific structure, so they are protected by the capsid. So option C is correct. 15 a scientist observed a virus that lacks a tail structure entirely, what is the most logical conclusion? टेल स्ट्रक्चर उससे गायब है, वो उसमें नहीं है, तो इसका कंक्लूजन्स क्या है? इट कुड स्टिल बी बैक्टीरियोफेज इफ नॉट ऑल हैव द टेल्स। आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज जो है उन सब बैक्टीरियोफेज में टेल फाइबर जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट हो, तो फिर वो बेस प्लेट के जरिए सीधी अटैचमेंट कर सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 व्हाट इज द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ टिपिकल आइकोसाहेड्रल फेज हेड, सो दे आर पॉलीहेड्रॉन with the 20 sides. So option B is correct. 17 if a bacteriophage successfully attached to the bacterium but lacks a functioning hollow tube in its tail, what process is directly blocked? आपको पता होना चाहिए कि जब इसका टेल जो है वो ट्यूब बंद है तो इसकी जो न्यूक्लिक एसिड है वो एंटर नहीं हो सकती। सो ऑप्शन सी पैसेज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट सेल। 18 which statement best explain why certain infections are labeled as opportunistic in the context of HIV या AIDS? हम क्यों कहते हैं ये opportunistic disease होती हैं? They take advantage of immune system that has been significantly weakened by the virus की वजह से हो चुका है। So option C is correct. 19 a patient has been taking highly active antiretroviral therapy for several years and has an undetectable viral load. Which of the following is true? Because the patient immune system is restored but they can still transmit the virus to the other. हम उसको दे रहे हैं लेकिन चांसेस तो है कि वो स्प्रेड कर ले। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 regarding the progressions of HIV, what is the significance of the 8 to 10 years? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज द टिपिकल टाइम फ्रेम फॉर अनट्रीटेड पर्सन टू डेवलप एड्स सिम्टम, जिसमें ये डेवलप होता है। 21 of the following scenario present the highest risk of HIV transmission accordingly to the preventive guideline provided. So obviously sharing a syringe for the intravenous use with an infected person के साथ जब आप syringe share करते हैं। So option C is correct। 22 which symptom is specifically categorized under brain impairments then an opportunistic invasion? जाहिर बात है ब्रेन के साथ अगर इन्फेक्शन मसला आ रहा है तो लॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। So option B is correct। 23 a patient has a condition that destroy the parietal cells in their gastric gland, अगर parietal cell gastric glands के अंदर उसको डिस्ट्रॉय किया जाए so which of the following would be directly consequences? So failure to absorb vitamin B12 due to the lack of intrinsic protein। आपको पता होना चाहिए कि वो इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाते हैं, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन नहीं बनेंगे तो उसकी वजह से विटामिन बी जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा B12। 24 पे आते हैं। विच सेल टाइप एक्ट एज ए ब्रेक on the digestive process by inhibiting the secretion of gastric
acid. D cell somatostatin release करता है which inhibit acidity. So option C is correct. 25. During a heavy meal, the stomach volume can expand significantly. What is the maximum approximate capacity mentioned? तो 4 लीटर तक जो है वो एक्सपेंड हो सकता है, 4 लीटर तक maximum. So option C is correct. 26. If the pH of the gastric juice is measured as 1, what is the approximate concentration of hydrogen ion? So ये 0.15 moles होंगे तो pH 1 होगा. So option A is correct. 27. Which region of the stomach is responsible for regulating the passage of chyme into the duodenum? स्टमक की 4 पार्ट्स हैं, लेकिन पाइलोरिक रीजन जो होता है यहाँ से कायम ड्यूडेनम में एंटर होता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 28. व्हाई डज अ पेशेंट फील द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन और इथेनॉल मच फास्टर देन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ सॉलिड मील? क्योंकि स्टमक वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दे कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड थ्रू द स्टमक वॉल्स के जरिए से. नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर हमारे पास दिया हुआ है 29. Recent research indicates that most peptic ulcers are not caused by simple acid erosions but by bacteria cause करता है Helicobacter pylori जिसको कहते हैं. So the presence of Helicobacter pylori bacteria. So option C is correct. Next आते हैं हमारे पास MCQs दिया हुआ है और 30. What is the primary evolutionary advantage of the stomach storage capacity described? जाहिर बात है हम बार बार तो नहीं कह सकते, एक टाइम खा लेंगे ताकि उसको स्टोर किया जाए. It allows human to eat large amount of calories quickly and digest them slowly. So option A is correct. 31. The transformation of the food into porridge-like consistency called chyme is primarily a result of. So that is a result of the mechanical churning by powerful muscle in the stomach. Muscle जो है उसमें पाए जाते हैं सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक. वो उसकी चर्निंग करता है, स्क्वीज करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 32. According to Pavlov experiment, why did the dog secrete gastric juice even through food never reached in its stomach? तो क्योंकि नर्व जो है, नर्व सिस्टम वो इसको स्टिमुलेट करता है. The nervous system initiates secretion through reflex control based on sensory inputs. Option C is correct. 33. A patient has a condition where their body cannot produce the hormone gastrin. Which of the following would be the most direct results? Gastrin जब secrete नहीं होगा तो gastric juice नहीं बनेगा ना. So there would be a significant decrease in the volume of the gastric juice secreted during a meal. So option B is correct. 34. Which statement best describes the role of the stomach while the small intestine is actively digesting a large meal? Because it acts primarily as a storage area, releasing chyme at a controlled pace. So option B is correct. 35. A patient experiences an infection in their foot. Based on the mechanical flow and anatomical structure, which clusters of the lymph node is downstream and most likely to be swell first as a localized barrier? तो obviously जो growing area होती हैं उनके lymph nodes infect होंगे. So option B is correct. 36. If a person consumes a high meal high in complex peptides, which sequence of event is most likely? तो वो जाहिर बात है प्रोटीन है, प्रोटीन gastrin को stimulate करेंगे. So gastrin is absorbed into the blood, eventually stimulated gastric gland to secrete juice. So option C is correct. 37. Which of the following is an accurate comparison between the duodenum and the rest of the small intestine? So option A. The duodenum is shortest segment where the entire small intestine is approximately 17 feet. So option A is correct. 38. Which of the following substance can bypass the digestive process of the small intestine and enter the blood stream directly from the stomach? So iron or highly fat soluble absorbed किए जाते हैं. So option C is correct. 39. Which trigger the brain to signal the gastric gland to increase gastric juice secretion even further? Option C. A high concentration of protein in the blood. So option C is correct.
40. What is the primary mechanism responsible for propelling chyme through the 17 feet length of small intestine? तो obviously muscles की contraction से होगा. So option B is correct. 41. In a closed circulatory system such as that of human, where would you expect to find the blood at a given moment? So because they are present in the heart, artery, veins और capillaries के अंदर पाया जाता है. So option B is correct. 42 पे आते हैं. Which of the following this describe the dual role of the pericardial fluids? एक तो ये कि ये शॉक एब्जॉर्बर होता है और दूसरा ये कि ये लुब्रिकेंट काम करता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 43. Why are the ventricle described as having thick walls compared to thin wall arteria? क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. If a wall between the left atrium and left ventricles has two flaps, it is identified bicuspid wall कहेंगे. Option C is correct. 45. The human circulatory system is vital for homeostasis because it distributes all of the following except mechanical energy का इसके साथ ताल्लुक नहीं है. Option C is correct. 46. A patient has a condition that weaken the connective tissue responsible for supplying blood to the walls of the large vessels. तो उसकी जगह पे क्या होगा? वासा में सोरम होगा या इसको वेसल ऑफ द वेसल्स भी कहते हैं, वो इसको सप्लाई करेगा. 47. Which layer is absent or significantly reduced in small arterioles compared to the large one? So tunica externa नहीं होता क्योंकि ब्लड वेसल में 3 लेयर होते हैं. tunica externa, tunica media, tunica interna. Option A is correct. 48. During a flight or fight response, sympathetic nerves stimulate arterioles. What is the immediate physiological result? तो जब उसको वो स्टिमुलेट करेंगे तो उस टाइम पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फ्लाइट एंड फाइट, ताकि बाकी मसल्स को जो है ब्लड की सप्लाई पहुंच जाए ताकि उसको जो ग्लूकोज है वो उसको पूरा किया जाए. उसके बाद जो है नेक्स्ट है 49. Why is the diameter of capillaries 8 to 10 micrometer, only slightly larger than a red blood cell? उसका 7.5 है. So option C, to slow down blood flow to allow efficient nutrient exchange, या ताकि वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर दे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड स्पेक कर ले. So option C is correct. 50. Which statement best explains the bluish appearance of the vein compared to the red appearance of the artery? Option B, it is a result of deoxygenated blood versus ब्राइट रेड ऑक्सीजनेटेड कलर होता है. oxygenated का. So option B is correct. 51. If the precapillary sphincter in a specific tissue bed remains permanently contracted, what is the most likely physiological consequences? जब ये हमारे पास आप इसको contractions को sustain कर लें तो इससे जो branches होती हैं वो बंद हो जाएंगी, blood की flow बंद हो जाएगी. So option B, reduce nutrient exchange between the blood and interstitial fluid. Option C is 52. A patient presents with a significant edema swelling. This could be caused by which of the following functions? जाहिर बात है precapillary sphincter में मसला है. So option B is correct. 53. Which layer of the vein specifically described is being composed of loose fibers connected to tunica externa? Option C is correct. 54. How does the width of the capillary facilitate its primary functions? So याद रखिए, it forces red blood cells to pass into one time, providing a time for gaseous exchange आसानी से हो. 55. Which of the following statement about vein is rule breakers accordingly to the contents? So याद रखिए, all veins carry deoxygenated blood. Which of the following statement about vein is rule breakers? सारी स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन यहाँ पे कहा कि all vein carry deoxygenated blood. पल्मोनरी वेन हमारे पास वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं. सो हमारे पास है 55 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन बी इज करेक्ट. 56. Which type of muscles tissue make up the precapillary sphincter and entire capillary branches? So smooth muscle का काम है. Option B is correct. 57. What fills the space surrounding the outside of the capillary wall? Interstitial fluid का काम है. Option C is correct. 58. What happened to the capillaries after they finish releasing nutrient and exchanging nutrients
material with tissue because they start joining to form venules बना देते हैं. पहले aorta, फिर artery, फिर arteriole, फिर capillaries, फिर venules, फिर veins. Option C is correct. 59. Which specific structure is located on the innermost layer tunica intima to prevent blood from flowing back? Wall पाए जाते हैं. Option B is correct. 60. Which components shown in the capillaries allowing material to pass through capillary wall? Pores के जरिए. Option B is correct. 61. Where do T cells complete their maturation process before entering the blood and lymph? Thymus maturation करता है. So option C is correct. 62. Which type of T cell is responsible for preventing the immune system from becoming hyperactive or attacking the body owns healthy cells? So ये suppressor T cells का काम है to protect from oversensitivity या overactivity. 63. What is the specific function of perforin released by cytotoxic T cell? ये जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स बनाता है ताकि उसमें वाटर एंटर हो, मीडियम हाइपरटोनिक हो तो बर्स्ट हो जाए. So to create physical opening in the target cells membrane. 64. During which phase of the cellular immune responses are the T cell triggered to divide repeatedly? ये एक्टिवेशन फेज में ऐसा होता है. So option D is correct. 65. Cell mediated immunity is the most effective against which are the following? Cancerous cell और virus infected cells का against होता है. So option C is correct. 66. What are the two main type of specific defense mechanism involved in immune system? एक cell mediated response और एक antibody mediated response. Is option B is correct. 67. Why does a body reject an organ transplant? MHC major histocompatibility complex की वजह से और सेल मेडिएटेड सेल्स T मेडिएटेड सेल जो होते हैं उनकी वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है C. 68 पे आते हैं. What triggers the second phase known as effector phase of the cellular immune responses? When activated T cell encounter their target cells and kill them. So option B is correct. 69. What specific structure on the host cell display the viral antigen to the cytotoxic? ये MHC का काम है, major histocompatibility proteins. 70. Which component actually forces the virus infected host cell to self-destructed? ये हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स T सेल रिलीज करते हैं उनकी वजह से होता है. So option C is correct. 61. What is the primary role of ID tags antigen in immune system? ID tags का क्या काम है? Recognition का काम है. To allow the cells to identify foreign particles. So option C is correct. 72. A B cell is activated to undergo rapid reproductions. Why specific event trigger this rapid reproductions? The release of cytokines by inactivated helper T cells की वजह से option B is correct. 73. How do daughter B cells compare to their mother cells regarding their ability to fight infections? So because they are clones, they produce the exact same antibodies बनाती हैं, इस वजह से option C is correct. 74. What is the functional difference between the clones of the plasma and the clones of the memory cells? जो memory cells होते हैं वो बाद में जो अटैक होने वाले वो होते हैं इन्फेक्शंस उनके लिए, और जो प्लाज्मा के होते हैं वो ऑन द स्पॉट के लिए होते हैं. So plasma cells are antibody factories for the current infection. Memory cells wait for future invasions. Option B is correct. 75. In the humoral response, what is the specific role of macrophage antigen presenting cell regarding the B cell? आपको पता होना चाहिए कि B cell एंटीबॉडी बनाती है और जो मैक्रोफेज है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये एंटीजन्स को कैप्चर्स करती हैं. So option B, it presents antigen fragments to help activated helper T cell which then assists B cell. So option B is correct. 76. Which statement best describe the primary structural configuration of the standard antibody? ये हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 heavy 2 light और Y शेप होती है. So option B is correct. 77. Where on the antibody molecule would you expect to find the highest variation in amino acid sequence between different antibody? At the tip of the Y shape जिसको एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, जिसको वेरिएबल साइट्स कहा जाते हैं, जो 110 और 130 अमीनो एसिड से बनी होती है. 78. What is the fundamental origin and primary maturation sites of the cell responsible for humoral immune response?
So they originate in the bone marrow and stay there for develops. B for bone marrow बनता भी है, mature भी उधर ही होता है. 79. Once antibody are secreted into the body, how do they clear to handle floating pathogens? They neutralize them or mark them for destructions by other immune weapons के जरिए. Option C is correct. 80. What specific protein on the helper T cell physically interact with the antigen presenting cell? CD4 cells. Option B is correct. Last MCQ है, accordingly to the historical, accordingly to which who first recognized and named the lymphatic vessels as the nationwide system throughout the entire human body? That was Thomas Bartolini किया था. So option B is correct.